Cognitive theory provides a convenient explanation of why response blocking works. Now, the subject is forced to observe a set of events. No response is followed by no shock. That is discrepant from the animal's expectation that no response will be followed by a shock. A new expectation that no shock will follow no response is gradually formed, and as a result, avoidance response gradually disappears. Now, this explanation was proposed by Ritchie well before Seligman and Johnston formulated this version of cognitive theory, and also before any evidence for the effectiveness of response blocking have been obtained. Can the other theories of avoidance behavior account for the effects of response blocking? An obvious explanation based on two-factor theory is that the forced exposure to the CS produces extinction of the conditioned response of fear. कि जब फोर्सफुली CS की तरफ एक्सपोजर रहेगा तो इट विल प्रोड्यूस एक्सटिंक्शन ऑफ द कंडीशन रिस्पॉन्स ऑफ फियर. अगर उसको वहाँ रहना ही पड़ेगा CS के साथ तो फिर एक्सटिंक्शन जो है कंडीशन रिस्पॉन्स की एक्सटिंक्शन हो जाएगी. The findings of effectiveness of response blocking is dependent on number of trials and the duration are consistent with the theory. बेसिकली इफ़ेक्टिवनेस कितनी होगी रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग की अब डिपेंड करता है कितने ट्रायल्स हैं, कितना ड्यूरेशन है. एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन वन फैक्टर थ्योरी माइट say that normal avoidance extinction is slow because there is no discrimination stimulus that signals the change from acquisition to extinction condition. The procedure used to prevent the avoidance response represents a drastic stimulus change. Now it gives the subject a cue. यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस है ना, वो प्रेजेंस है, इसीलिए सब्जेक्ट को एक ड्रास्टिक डिफरेंस नज़र आता है, स्टिमुलस चेंज नज़र आता है, एंड दैट things are now different from the preceding acquisition phase that he learns, and it is therefore not surprising that subsequent extinction proceeds more quickly. Seligman and Johnston claim that one-factor theory actually makes no clear prediction about the effects of response blocking. That is, if it had turned out that response blocking was ineffective, one-factor theory would always argue that response blocking part of experiment is so different from acquisition and extinction phase that there is no generalization to the extinction phase. उन्होंने कहा कि ये वन फैक्टर थ्योरी तो बड़ी अजीब है क्योंकि ये इसकी कोई प्रिडिक्शन क्लियर नहीं है. अगर रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग ना काम आता तो वो कहते कि ये तो एक्सटिंक्शन फेज़ जो है वो जनरलाइज नहीं है एक्विजिशन फेज़ के लिए, इसीलिए नहीं काम हुआ. ठीक है. हाउएवर सेलिगमैन एंड जॉनसन फेल टू नो दैट बोथ द कोग्निटिव थ्योरी एंड टू फैक्टर थ्योरी could find similar excuses if response blocking was ineffective. है ना, लेकिन cognitive theory और two factor theory भी तो कह सकती है सेम बात. Like the one factor theorist, the cognitive theorist and the two factor theorist could also claim that subject simply treat करता है response blocking phase को, right? And the extinction phase are two separate situations, so the subject does not generalizes from one phase to other. It seems therefore that all these three theories are equally vague in their predictions about effectiveness of effects of response blocking. Now, each can account for more rapid extinction, but none could be hopelessly embarrassed if it had turned out that response blocking did not alter the course of extinction. Where avoidance response become ineffective, according to a cognitive theory, a second way to hasten the extinction of avoidance response would be to present the shock whether or not a response occurs. कि आप हेल्पलेसनेस क्रिएट करो, शॉक दो ही दो, अगर रिस्पॉन्स हो रहा तब भी और नहीं हो रहा तब भी. Now this contingency would violate a subject's expectation that a response leads to no shock and therefore avoiding response should decline. Several studies have shown that following avoidance response with shock does lead to rapid extinction of the responses. Of course, this result is not surprising, and you should be able to know that both two and one factor theory can easily account for this finding. Now, the presentation of shock following an avoidance response is a dramatic change in conditions that should quickly produce change in subject's behavior. अगर हम उसे मतलब एक अगर रिस्पॉन्स कर भी रहा है तब भी शॉक दे ही रहे हैं, तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ शॉक जो है ये ड्रामेटिकली
It's something that could quickly produce change in subject's behavior. So subject का behavior में भी change आना बड़ा लाजमी है ही है. So conclusions about the theories of avoidance. Although two-factor theory has been popular theory of avoidance behavior, it still suffers from several weaknesses. Avoidance learning can occur both when there is no external signal for shock and when a response does not terminate the signal. तो अवॉइडेंस लर्निंग जो हो सकती है दोनों कंडीशंस में हो सकती है, तब भी जब कोई एक्सटर्नल सिग्नल ना हो शॉक का, यानी CS हो ना हो, देन अ रिस्पॉन्स डज नॉट टर्मिनेट द सिग्नल, तब भी हो सकती है जब एक रिस्पॉन्स जो है वो टर्मिनेट ना करे उस सिग्नल को. ठीक है, यानी CS को कट ना किया जाए, बंद ना किया जाए, तो रिस्पॉन्स के द्वारा CS ख़त्म ना हो. Although fear plays a crucial role in this theory, the bulk of evidence suggests that fear disappears, yet avoidance response continues as the subject becomes experienced. Now, इसमें बोला है कि fear तो गायब हो जाता है, will disappear, avoidance response strong होता रहता है still. Finally, two-factor theory offers no convincing explanation for the slowness of extinction in avoidance tasks. एक तो ये हो गई इसका डिसएडवांटेज. देन अनदर वन कुड बी कि टू फैक्टर थ्योरी कोई भी कन्वीनियंस एक्सप्लेनेशन भी नहीं देती है फॉर द स्लोनेस ऑफ एक्सटिंक्शन इन अवॉइडेंस टास्क, कि अवॉइडेंस टास्क में स्लोनेस क्यों आई है. ठीक है, नाउ बोथ वन फैक्टर थ्योरी एंड टू फैक्टर थ्योरी अवॉइड द मेजर प्रॉब्लम ऑफ टू फैक्टर थ्योरी. वन फैक्टर और कोग्निटिव दोनों ही थियरी टू फैक्टर थ्योरी की एक मेजर प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं बाय अज्यूमिंग दैट फियर इज़ नॉट एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ अवॉइडेंस बिहेवियर. तो वो तो सीधा कहते हैं कि फियर तो है ही नहीं अवॉइडेंस बिहेवियर का एक क्रूशियल पार्ट. बट वी हैव रिसीव्ड अ नंबर ऑफ स्टडीज शोइंग दैट फियर डज प्ले अ मेजर रोल इन अवॉइडेंस बिहेवियर. Because of these findings, it seems that one factor and cognitive theory would be most accurate if acknowledged that fear can play a role in avoidance situation, although it is not necessary. Right? Seligman and Johnston included an emotional component in their theory of avoidance. Seligman Johnston ने cognitive में emotional component भी add किया है. That is basically a statement that classical conditioning of fear response can influence अवॉइडेंस बिहेवियर. जो बेसिकली यही स्टेटमेंट है कि क्लासिकल कंडीशनिंग, फियर रिस्पॉन्स की क्लासिकल कंडीशनिंग इन्फ्लुएंस करती है अवॉइडेंस बिहेवियर को.